So first of all, if you just see the term stationary wave, another name for this wave is also known as standing wave. Another name for this wave is also called as what? Standing wave. So stationary, we are pretty aware about the term stationary. Stationary means not moving. So yes, we will be having a wave which is actually moving, but it seems it's not moving. And how is that sort of wave going to be created or formed? The stationary wave is going to be formed in such a way that when two waves which are traveling in the opposite direction, they superpose. And I hope you're pretty aware about the term of superpose. Like they overlap one another in such a way that they are having same amplitude, same frequency, same wavelength. So when they're going to superpose, so they are going to form what sort of wave? A stationary wave. So I'm just going to show you its depiction in a while. So always remember, energy is not transferred. Energy is not transferred in stationary waves. This is the distinctive feature of the stationary wave. Energy is not transferred in stationary wave. Whereas energy किस तरह की wave में transfer होती है? Energy is only transferred in a progressive wave. So in the case of progressive wave, only the energy gets transferred. So this is the differentiating point between both the types of wave, the stationary waves and the progressive waves. So in progressive waves, energy is being transferred, and in the case of stationary waves, energy is not transferred. So if you get a question in paper for 1 or 2 mark, what is the difference between the progressive wave and the stationary wave? So you must write down that energy एक में energy transfer होती है, एक में energy transfer नहीं होती. अच्छा, actually, stationary wave is not a progressive wave, but the stationary wave is made up of progressive wave. अब इस बात का क्या मतलब है? तो let's explore it, that how a stationary wave is actually going to be formed. So क्या वो तरीका है कि जिससे आपकी stationary wave जो है वो पैदा होगी? तो let's see how will it work. मैं कहता हूं मेरे पास एक rope है somewhat like this, and this rope is fixed with a wall. This is a fixed end. There's a fixed end, fixed support, and let's say this is a rope I'm having, and this rope is in my hand. This is my hand, right? So to generate a wave in this rope, if I need to produce a wave in this rope, अगर मुझे एक वेव पैदा करनी है इस रोप के अंदर, what is required? I have to move my hand in up and down direction, like I have to produce a jerk. And when a jerk is given, so what will happen? A wave will be produced somewhat like this, right? Let me call this wave as an incident wave, shuru wali wave. This is called as an incident wave. और कॉन्टिन्यूसली ये जो हाथ है ऊपर नीचे वाइब्रेट करता जा रहा है. होगा क्या कि when this incident wave is going to hit this fixed support, so this wave is going to reflect back. ये वेव यहाँ जाएगी, टकराएगी, और यहाँ जाने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेगी कुछ इस तरह. जब हमारे पास एक ऐसी वेव रिफ्लेक्ट बैक कर जाए जिसका सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम वेलोसिटी हो, पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, if it is moving in the opposite direction,
So what is going to be formed? A stationary wave is going to be formed. So you are going to witness कि when this sort of orientation loops जब बनना शुरू हो जाएंगे ना, इस तरह के loops, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है किस तरह की वेव की? स्टेशनरी वेव की. तो स्टेशनरी वेव को हम डिफाइन कैसे करेंगे? Stationary wave is produced. Stationary wave is produced when two same type of waves same type of waves traveling in opposite direction traveling in opposite direction superpose each other having same amplitude same frequency and wavelength. तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है. We can see the example of the stationary wave generally, like in the case of guitars or violins. If there is a string or string को plug किया जाता है continuously, when the string is being plugged, so it is going to vibrate continuously, and when one of the wave which is traveling in the string, it hits the fixed end, तो एक रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होती है. और जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में ओवरलैप कर जाएं इस तरह कि उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो, तो दे जनरेट अ सॉर्ट ऑफ वेव कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव. दे विल बी प्रोड्यूसिंग अ स्टेशनरी वेव. अब हमारे पास जो डायग्राम होती है स्टेशनरी वेव की वो किस तरह की होती है? द डायग्राम ऑफ स्टेशनरी वेव इज समवॉट लाइक दिस. सो आवर स्टेशनरी वेव की डायग्राम कुछ इस तरह की होती है. लेट्स से देयर इज गोइंग टू बी अ डॉटेड एंड लाइक दिस, a dotted end like this. तो ये लूप्स जो बन रहे हैं ना, ये आपके पास एक ओरिएंटेशन है किस चीज की? स्टेशनरी वेव की. तो आप देखेंगे इसमें कोई ऐसे पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं लूप्स के अंदर जहां पर वाइब्रेशन जीरो है. ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज जीरो. एम्पलीट्यूड इज व्हाट? जीरो. यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, और ये वाले पॉइंट पे भी एम्पलीट्यूड जीरो है. इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड. Node is represented as capital N. So the point on a stationary wave where amplitude is zero is called as node. So there are multiple nodes in one stationary wave. And likewise, the point where the vibration is maximum or where the particle are displacing, the particles are having maximum displacement, that point will be called as antinode. Antinode is generally being represented as capital A. So there are multiple antinodes. ये एक antinode है, ये एक antinode है, ये एक antinode है. तो node पे क्या होता है? At node there is at node there is zero amplitude. ठीक है? And at antinode vibration is what? Vibration is maximum.
या आप ये भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, सो वाइब्रेशन पॉइंट्स आर पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो ये एंटी नोड होता है, नोड पे जीरो डिस्प्ले जीरो एम्पलीट्यूड होता है। एंड अनदर थिंग, एक नोड से एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड is lambda by 4. The distance between node and antinode is lambda by 4. And the distance between two consecutive nodes, एक नोड से दूसरी नोड तक का डिस्टेंस है lambda by 2। ठीक है, तो आप ये पॉइंट अपने पास लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड is equals to lambda by 4. The distance between node and antinode is lambda by 4। और मैं यहां पे ये नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकता हूं, या नीचे लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स is equals to lambda by 2, यानी कि वेवलेंथ ऑफ अ वेव डिवाइडेड बाय 2। So distance between two nodes is lambda by 2 and the distance between node and antinode is lambda by 4. You have to memorize these points, right? Is the basic concept of stationary wave understandable? कि stationary wave generate कब होती है? Stationary wave is the result of superposition. And what is superposition? The overlapping of two waves. किस तरह की two waves overlap कर रही हैं कि जो opposite direction में travel कर रही हों? Let's say incident wave is traveling towards right and there's another wave, let's call it as reflected wave, it is traveling to the left. So when incident wave overlaps with the reflected wave, in such a way both have same amplitude, both have same frequency, both have same wavelength, both have same velocity, and both are having same nature as well. So they are going to form a stationary wave. स्टेशनरी वेव की रिप्रेजेंटेशन होती है, इट इज बीइंग shown in the form of loops. So there are multiple points being shown on the stationary wave where the vibration is zero, where the amplitude is zero. Such point is called as node. And there is one point where the vibration is maximum. Such point is called as antinode. And the distance between node and antinode is lambda by 4. And the distance between two consecutive nodes is lambda by 2. Likewise, if I say the distance between consecutive two antinodes, दो antinodes के दरमियान भी जो distance होगा, that will be equivalent to lambda by 2. So this is how you have to memorize the stationary waves. Yes, student, tell me, is the concept clear? Please speak up. Are you with me? Yes, Yes, sir. sir. Shall I move on? क्या मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूं? Yes, sir. Yes, sir. Rest of you, please speak up. Okay, ji. So let's see the stationary wave things related to it. So stationary waves or the standing waves are produced by the superposition of two waves जिनका nature of frequency same हो, wavelength same हो, amplitude same हो और ये opposite direction में चल रही हो। तो वही बात मैंने आपको पहले लिखवा भी दी है। और ये जनरली होती कैसे प्रोड्यूस है कि लेट से कोई वेव अगर ट्रेवल कर रही है, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए किसी एक एंड से, सो जब वो सुपरपोजिशन होगी दोनों वेव की, पीक्स और ट्रफ्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मीट करेंगे,
तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। और याद रखिएगा, नो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन अ स्टेशनरी वेव, whereas only the energy is transferred in what sort of waves? Progressive wave. तो यहाँ पे एक आपके पास एग्जांपल भी शो हो रही है कि लेट्स से देयर इज अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को आपने अपवर्ड जर्क दिया, तो एक वेव ऊपर को ट्रेवल करके जा रही है। जब वो आगे फिक्स एंड पे पहुंची, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक की। जैसे उसने रिफ्लेक्ट बैक की, तो इन्होंने सुपरपोज किया एक पोजीशन पे, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया? एक लूप सा फॉर्म हो गया। और हम इसको स्टेशनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब जो पार्टिकल्स हैं इसमें, वो अप एंड डाउन ही मूव करते रहेंगे, वो आगे को मूव नहीं करेंगे। और जब पॉइंट्स और पार्टिकल्स ऑफ द वेव आगे को मूव नहीं करेंगे, they are not going to transport the energy. So that is why it is called as stationary wave, and that is why it is called as that it does not transfers energy. आगे चलते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव? स्टेशनरी वेव फॉर्म करने के लिए कंडीशंस ये चाहिए कि दोनों का सेम नेचर हो, और दोनों कैसे ट्रेवल कर रही हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में। और नेक्स्ट इज कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये बातें प्रीवियसली भी मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ। So stationary waves is going to be formed when the two waves are traveling in opposite direction, having same nature, same frequency, same wavelength, same amplitude, same velocity. So the overlapping of such sort of waves is going to produce the stationary wave. Moving onwards, we can see how a stationary wave can be formed on a stretched spring. So there is a string. So this string is being connected to a vibrator. So vibrator or an oscillator is going to move up and down. It will be producing a stationary wave which is going to hit this pulley end. और जैसे वो हिट करेगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, and there is going to be a formation of loops. So this formation of the loops is going to show that stationary wave has formed. And similarly, the stationary wave formed in the guitars and violins when you pluck their string. Likewise, we can also see that stationary wave can also be produced in the case of microwaves. So in the case of microwaves, like in exam, you can get a question, explain how stationary waves are produced using a microwave. 2 to 3 mark question can appear in your paper. So for that, you are going to say that we will be using a microwave source, and there will be a metal reflector placed on the opposite end, and in between them there will be a detector. Detector is further connected to one meter. So what will happen? We are going to move the reflector. We are going to turn on this microwave source. When microwaves are emitted, we will be moving to and fro slowly the metal reflector. And this detector is going to sense the maximum spikes and the minimum spikes. The maximum spikes is going to tell us that antinodes has formed, and minimum spike or a zero spike will be telling us that nodes are present. So this maximum and minima orientation will be telling that stationary wave has been produced, right? So a microwave source is placed in line with the reflecting plate and a small detector between the two. The reflector can be moved to and fro from the source to vary the stationary wave pattern. By moving the detector, it can pick up the minima and maxima of the stationary wave pattern. Likewise, we can also see that stationary waves can also be formed in the air columns. Air columns are sort of uh, objects which can be considered as cylindrical long pipes. तो let's say मेरे पास ये एक एयर कॉलम है, ये एक प्लास्टिक की पाइप को भी मैं एयर कॉलम कह सकता हूँ। इसका एक एंड जो है इट इज क्लोज्ड एंड द अदर एंड इज ओपन, and to that open end we have just placed a sound source. What we have placed? A sound source is present in it. अच्छा, बिफोर दिस एयर कॉलम में हमने क्या किया? पाउडर फॉर्म में कोई भी पाउडर इसके अंदर रेंडमली रख दिया। ठीक है, कोई भी पाउडर जो है ना, किसी भी चीज का पाउडर फॉर्म हमने इस एयर कॉलम के अंदर रख दिया था पहले।
एंड एज वी अप्लाइड दिस साउंड सोर्स, सो थोड़े टाइम बाद देखा कि एक फिक्स पॉइंट के ऊपर उस पाउडर के हीप्स बनना शुरू हो गए आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस. After certain distance, we are going to witness that some powder heaps are going to be formed. पाउडर कुछ कुछ इकट्ठा होना शुरू हो गया थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर. ये चीज क्या बताएगी हमें? ये चीज हमें बताएगी कि यस, दिस इज द टाइम when the stationary wave is going to be produced inside the air column. और ये हीप्स क्यों बने? बिकॉज यहां पे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जीरो थी. जहां जहां नोड बनता जाएगा, जिस पॉइंट के ऊपर नोड बनता जाएगा, अ पाउडर हीप विल बी formed there. A heap of powder will be formed there. So dry heaps of powder will be formed where nodes are going to be present. और वो पॉइंट्स जहां पर एंटी नोड डेवलप हो रहे हैं वहां से ये पाउडर हट जाएगा. वहां से ये सैंड या सैंड का पाउडर है या किसी भी चीज का, इट विल बी रिमूव्ड. So at anti-node there will be no sand. At a node there will be a sand. So this is an indication how we can say that a stationary wave will be produced in the air column. So the formation of stationary wave inside an air column can be produced by a sound wave. This can be demonstrated by placing a fine powder inside the air column and a loudspeaker at open end. एक certain frequency के ऊपर ऐसा होगा कि powders जो हैं they form an evenly spaced heaps. They will be forming evenly spaced heaps. एक थोड़ी थोड़ी space के बाद वो अपने आप को कंपोज कर लेंगे, जो कि शो करेगा कि यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं है, यहाँ पे नोड्स फॉर्म हो रहे हैं, और जहां पर हीप्स नहीं होंगे वहां पर एंटी नोड्स फॉर्म हो रहे हैं. एंड इन दिस वे अ स्टेशनरी वेव विल बी प्रोड्यूस्ड. Is this fine? How a stationary wave is going to be formed in air columns? And here the stationary wave is actually being formed due to what? It is formed due to the sound wave. It is formed due to sound wave. Yes, students, are you with me? Yes, sir. एक दो बच्चों के अलावा कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा. प्लीज मुझे बताइए क्या ये चीजें समझ आ रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक वेव आगे जाएगी, वो किसी फिक्स सपोर्ट से टकरा कर वापस आएगी, और ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे. जब वो ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बन जाएगी? स्टेशनरी वेव बन जाएगी. दिस इज हाउ अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड. Two waves traveling opposite, having same amplitude, same wavelength, same frequency, they overlap, they produce a stationary wave. Okay, moving onwards. So formation of stationary wave देख लेते हैं. What are nodes? Nodes की definition आनी चाहिए आपको. Nodes are the points where there is no vibration. ठीक है, जहां पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, या आपका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? एम्पलीट्यूड इज जीरो. So that point is node. और एंटी नोड क्या होता है? Where the vibrations are at their maximum amplitude. यहाँ पे वाइब्रेशन सबसे ज्यादा हो रही होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज एंटी नोड. सो नोड्स और एंटी नोड्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, तभी हम इस तरह की वेव को बोलते हैं स्टेशनरी वेव. अच्छा, याद रखिएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स हमेशा क्या होगा? द फेज डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स हमेशा जीरो होगा. और फेज डिफरेंस बिटवीन टू एंटी नोड क्या होगा? फेज डिफरेंस between two antinodes, it will always be 180 डिग्री. ये बात याद रखनी है. क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखें, यहाँ पे पार्टिकल अगर एक ऊपर था, तो जब नेक्स्ट एंटीनोड आया तो वहां पे इस ये वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ पे होगा? नीचे को. ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान कितना आउट ऑफ फेज ये हो रहे हैं? देर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री. तो ये फिक्स बातें हैं, ये दो बातें आपने याद रख लेनी है कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स इज 0 डिग्री एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज 180 डिग्री. ठीक है, so between nodes all the points on the stationary waves are in phase. There is no phase difference between the two nodes.
मूविंग ऑनवर्ड्स, अच्छा ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नोड से नेक्स्ट नोड तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू लेमडा बाय 2, और नोड से एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू लेमडा बाय 4। और आप ये भी कह सकते हो एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का भी जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेमडा बाय 2। सो द डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नोड or anti-node to anti-node, that will be lambda by 2, and the distance from node till anti-node will be lambda by 4. So ये distances आपने याद रखने हैं. Yes student, is this clear? Hurry up, please speak up. I have to finish this topic. Yes, Yes, sir. sir. Okay, moving onwards. Next thing is, so let's see, this is an example being shown in front of you. There is a stretch string which is used to demonstrate a stationary wave as shown in the diagram. This is an exam question, by the way. Which row in the table correctly describes the length and the names of x and y? So, yes, student, tell me what is the name given to this point x? Hurry up, please. No. Node. X no. X is known as node. And what is the name given to y? Antinode. 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 Okay. Now question says you need to find out the length L. L की value क्या होगी? So L is comprising from one node till this node. So I have just said कि एक नोड से दूसरी नोड का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाय 2। फिर एक नोड से दूसरी नोड तक डिस्टेंस क्या होगा, लेमडा बाय 2। फिर एक नोड से दूसरी नोड तक डिस्टेंस क्या होगा, लेमडा बाय 2। फिर एक नोड से दूसरी नोड तक डिस्टेंस क्या होगा, लेमडा बाय 2। फिर एक नोड से दूसरी नोड तक डिस्टेंस क्या होगा, लेमडा बाय 2। सो इफ वी एड अप ऑल ऑफ देम, ये कितनी वेवलेंथ बन जाएगी? This will, can we say that this is almost equivalent to 2.5 times of wavelength, the whole of a length L? Yes, sir. Can we say it? Please speak up. Yes, Yes, sir. sir. Yes. So our correct answer in this regard is going to be what? Point X is node, point Y is anti-node, and the length L will be equals to 2.5 times of wavelength. Is it clear? Hurry up, speak up. Yes, sir. Yes, Okay, sir. moving onwards to another question. A question says that there is a stationary wave shown in the diagram was created on a stretch string. It had two instants of maximum vertical displacement. So there is going to be two instants for the maximum vertical displacement. The frequency of the wave is 13 hertz. What is the speed of the wave? तो आपको क्या करना है, आपको स्पीड निकालनी है. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा. फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है बट हमारे पास लेमडा की वैल्यू नहीं है. तो हम लेमडा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हमें पता है टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक उसने हमें बता दी कितनी है, 90 सेंटीमीटर. पर मुझे ये भी पता है कि दिस इज माय नोड, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड, दिस इज फोर्थ नोड. इज इट सो? और मुझे ये भी पता है कि नोड से लेकर नोड तक का जो डिस्टेंस है वो है लेमडा बाय 2. फिर नेक्स्ट नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस क्या है, लेमडा बाय 2. और फिर नेक्स्ट नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस कितना है, लेमडा बाय 2. तो अगर इन सारे लेमडा बाय 2 को मैं ऐड करूं, लेट्स से लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2, ये पूरी लेंथ किसके इक्वल बन जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. तो अगर मैं इसको एड अप करूं, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 विल बी माय एलसीएम एंड एट द टॉप इट विल बी 3/2 लेमडा विच इज 90 सेंटीमीटर. तो लेमडा यहां से मेरे पास आ जाएगा 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, और 3 वन टाइम्स, 3 30 टाइम्स कैंसल्ड आउट. सो आंसर विल बी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ओरिजिनली लेंथ सेंटीमीटर में थी तो मेरा लेमडा भी सेंटीमीटर में आएगा. और इन शॉर्ट आई कैन से इट विल बी 0.6 मीटर्स. अब मुझे क्या निकालनी है, अपनी स्पीड निकालनी है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा. सो व्हाट विल बी माय v इक्वल्स टू, v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इज 13 and wavelength is 0.6. So
13 into 0.6, it will be nearly equivalent to 7.8 meter per second. This is how the speed of the wave can be calculated. Yes, student, tell me, is this understandable? Yes, sir. So see how we can find out the speed and wavelengths of the stationary wave. This is the mechanism of finding it out. So let's see how a stationary wave can be formed in different scenarios. What are the different scenarios? So let's speak on it one by one. So now we are going to measure the wavelength of a stationary wave in different scenario. What is the very first scenario? When two ends are fixed. Like two ends are fixed means what? This is a wall, this is a wall, and we are having a rope tied on both the ends. So can we say both the ends are fixed? Yes. This end is fixed. This end is also fixed. So what is the basic type of stationary wave which can be formed in it? The basic wave which can be formed is a one single loop. और जब एक सिंगल लूप बनता है किसी स्टेशनरी वेव का, उसको हम नाम देते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, or we can also call it as first harmonic. These are the names which can give for the when first loop is formed. For the first loop of stationary wave या one loop of the stationary wave, जब भी किसी कोई स्टेशनरी वेव फॉर्म हो और उसमें सिर्फ एक ही लूप हो, एक ही लूप होने का क्या मतलब है? दो एंड कॉर्नर्स पे नोड्स बनेंगे और एक उसका एंटी नोड बनेगा. देन वी आर गोइंग टू से दैट इट इज वाइब्रेटिंग, और इसके जो हार्मोनिक्स है उसको हम नाम दे देंगे, फर्स्ट लूप को हम नाम दे देंगे फर्स्ट हार्मोनिक. एंड दिस one single loop will be called as fundamental mode of vibration. This will be called as fundamental mode of vibration. So there will be fundamental mode of vibration for one single loop. और अगर मेरे पास दो फिक्स एंड पे टू लूप्स बन गए, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर मेरे पास दो लूप्स बन गए किसी स्टेशनरी वेव के लाइक दिस, so what is the name given to two loops? It is known as second harmonic. या आप इसको ये भी नाम दे सकते हो, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फर्स्ट overtone. It can also be called as first overtone, or it can also be called as second harmonic. And if हमारे पास फिक्स एंड करते हुए तीन लूप्स बन गए, ठीक है, ये दो फिक्स एंड पे तीन लूप्स बन गए, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक. दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक. या आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, सेकेंड overtone. This can also be called as second overtone. Third harmonic, second overtone, first harmonic, second second harmonic is first overtone और फिर first harmonic single loop. Are you understanding? Yes. Yes. ठीक है, whenever the multiple loops are going to be formed in a case of single loop, it will be called as first harmonic. In the case of two loops, it is called as second harmonic. In the case of three loops, it will be called as third harmonic. So first harmonic, second harmonic, third harmonic and so on so forth, multiple harmonics चलते रहेंगे. अब हम इसको यूज करते हुए हम वेव की स्पीड और फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स सी कैसे. तो लेट्स से जब मेरे पास फर्स्ट हार्मोनिक होगा, फर्स्ट हार्मोनिक मींस जब एक सिंगल लूप बनेगी, व्हेन आई एम गोइंग टू हैव वन सिंगल लूप, मैं लेट से कहता हूं मेरी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल. तो एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक कितना डिस्टेंस होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं. द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी लैम्डा बाय 2. So can I say that for the first harmonic case my length will be equals to lambda by 2? Yes.
और यहां से मैं ये बात भी कह सकता हूं कि मेरी वेवलेंथ इस वक्त कितनी वैल्यू के इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ